about to turn it up. Fuerte bailando y se baila así. So, this are flares. तो चलो अब सीखते हैं ये होती कैसे है. Peace out. What's up everyone, so here back with another tutorial. Today we're gonna learn how to flares. So let's get started. So we're gonna start with stretching sessions. Then we do a power move. So let's get started with stretching. Just follows. बस उन चीज़ों को फॉलो करो जो मैं करता जा रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, ठीक है. उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है. तो उसमें कोई वगैरह पेन भी नहीं होगा अगर तुम फर्स्ट बिगिनर हो तो, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट वी गोना डू आवर लेग स्ट्रेचेस. ओके, जस्ट पुट योर हैंड्स टुगेदर and down on your right side. Stretch from this side. Pain feel here and here. Down. Then again, put up, down. Stretch for minimum 5 to 10 minutes. Okay. So next, we're gonna stretch with hand sessions. So let's rotate and stretch and up, down. So next we want to stretch legs and open and stretch. So now we're going to our flares. So let's watch flares कैसी होती है, तो करते हैं इसे. 3, 2, 1, go! So it's our flares. तो चलो अब सीखते हैं ये होती कैसे है. Peace out. So let's get started. First step. Put your hands down, open your legs. First, if you are clockwise, do from this side. I'm anti-clockwise, that's why I'm doing from this side. So put your left hand down in between your legs like this, and always remember to twist your left hand like this. Never put hand like this. अगर ऐसे हाथ रखोगे जमीन पर तो तुम फ्लेयर नहीं मार पाओगे, यहाँ पर स्टक हो जाओगे ऐसे. एंड हैंड विल डाउन अगर ऐसा हाथ रखोगे. तो तुम्हें करने के लेफ्ट हैंड डाउन एंड पुश. नाउ remember, first jump, 2, down. See, right leg in power. अब हमें यहाँ से बहुत सारी पावर लेनी है अपनी लेफ्ट लेग से, तभी हम फ्लेयर निकाल पाएंगे. डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन, किक. द हार्डर यू किक, द मोर यू गेट द पावर. जितनी तेज अपनी किक मारोगे तुम, उतनी अच्छी तुम्हारी फ्लेयर आएगी. ऑलवेज रिमेंबर ऑन योर लेफ्ट लेग, ठीक है. लेफ्ट लेग से किक मारनी है, बूम, एंड देन राइट लेग विल गो ऑन अप. ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप, left leg kick, right leg on your right ear. Just put and hit up, up. Kick करना है, boom, up, boom. Just now, first and second step together. Boom, boom. Then, when you put two
First boom, boom up. Now swing your left leg in motion and put on left ear. Okay? Position, down, hit, up. Now swing your left leg, boom and kick up. ठीक है? And हमेशा याद रखना जब आप अपनी किक अप मारोगे उसको कम से कम पे 2 सेकंड तक होल्ड रखना है हवा में, क्योंकि अगर आप ऐसे करके नीचे गिरा दोगे तो तुम्हारी फ्लेयर नीचे आ जाएगी। और हमेशा याद रखना तुम्हें जो हैंड्स है उसको ऊपर चढ़ाना है, उसके ऊपर ऐसे अप, यहाँ पर किक अप। अगर ऐसे करके मारोगे तो यू नोट्स विल गेट अ फ्लेयर, शॉर्ट शोल्डर्स। ठीक है, शोल्डर पे अप चढ़ाना है, किक अप। ठीक है, तो हमारे 3 स्टेप्स क्या हुए? स्विंग, राइट लेग अप एंड लेफ्ट लेग डाउन एंड नाउ लेफ्ट लेग किक अप। ठीक है, 1 2 3 4 स्टेप्स टुगेदर। ठीक है, बूम बूम। नाउ दिस स्टेप we just put a right hand other side. Okay, first step hit then boom, 4th step। हमेशा याद रखना जब आप 4th स्टेप करोगे, जो अपनी लेफ्ट लेग किक करोगे ऊपर, उसी टाइम पर तुम्हारा राइट हैंड नीचे की तरफ आएगा एंड तुम्हें अपना सारा वेट अब शिफ्ट कर देना है राइट हैंड के ऊपर। जस्ट शिफ्ट। Motion. When you put all the steps together, you get a very good one flare. When you get a flare, you also get 3 common moves like windmill, head spins, etc. ठीक है? So let's make a combo with flare and windmills. Because it